Nernst equation. Okay. So what was the answer to the last question? So last question का आंसर था 1.0409. Good. Let's have another question then. We have Zn solid, Zn2 plus aqueous, Cu2 plus aqueous, and Cu solid. Okay. Zn2 plus concentration is 0.001 molar and Cu2 plus concentration is 0.1 molar. The temperature is 298 Kelvin. Could you give me the E cell? सर ई सेल निकालना है हाँ जी, मतलब नर्स्ट इक्वेशन से. हाँ जी. तो इसमें ई नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? ई नॉट की वैल्यू आप निकाल लोगे ना. आपको ई नॉट ऑफ कॉपर एंड ई नॉट ऑफ जिंक पता है ना. कॉपर इज प्लस 0.34 volts and zinc is minus 0.76 volts. हाँ. What's the answer? सर 2 मिनट.
So 2.141. Ananya, what are you doing? Think again. So मेरे शायद E naught E value, cell. E naught value is 1.1 volts Yes sir. and it's 0.0591 Hmm. by 2 multiplied Yes by sir. 2. By 2. 0.0591 divided by 2 multiplied by 2. So multiplied by 2 क्यों? Log of 0.1001 divided by 0.1. हाँ सर मतलब वो तो बाद में लॉग में वैसे हो जाएगा. हो जाएगा नहीं नहीं भाई, लॉग भी तो निकालना है ना आपको. नहीं मतलब लॉग निकाला हुआ है सर. लॉग की वैल्यू 2 आई हुई है. हाँ तो log की वैल्यू 2 आई हुई है तो इट वुड बी 0.0591 divided by 2 into 2. So it will यस actually सर. come out to be 1.1 plus 0.0591. फिर वो मैंने पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दिया. तो भी क्या होता है, आपने हो ऐड करके गया. मल्टीप्लाई कर दिया. पहले आपने ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया. आपने 1.1 के अंदर 0.0591 को ऐड करके फिर 0.0591 को ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐड नहीं किया, सब्ट्रैक्ट ही किया. You had to add. फिर 2.2 में से कर दिया ना, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2.2 कहाँ से ले आए. तो वो मल्टीप्लाई कर देना. log 2 बाद में पुट किया, मतलब 2 log 100 की वैल्यू 2 बाद में पुट करी. तो 1.0.059. 1.041. 1.1591. 1 point. 1591. सर तब भी आंसर तो नहीं आ रहा. कैसे नहीं आ रहा, ये देखो. हमारे पास है E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log concentration of product divided by concentration of reactant, that is Q. यस सर. Now we get E cell is equal to E naught cell, that is 1.1 volts, minus 0.0591 by 2 log. The product concentration is Zn2 plus, that is 0.001. Reactant is 0.1. So this actually turns out to be 10 raised to power minus 2. यस सर. So I would get this value as minus 2. So if I get this value as minus 2, the minus 2 and 2 get cancelled, minus minus get cancelled, it becomes plus. So it simply becomes 1.1 plus 0.0591. So that is 1.1591 volts. ओके सर. Got it? Fine. From the last two questions, you can see one thing. If we increase the concentration of the reactant, the E value comes out to be more than E naught. But if we increase the concentration of the product,
the E value comes out to be less than E naught. तो जितना प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा E की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, जितना रिएक्टेंट बढ़ता चला जाएगा E की वैल्यू उतनी ज्यादा होती चली जाएगी. Can you see that? Yes, sir. Okay. So let's get along with the third question. Write it. For our zinc copper cell, for a zinc copper cell having Zn2 plus concentration, for a zinc copper cell having Zn2 plus concentration 1 molar, for a zinc copper cell having Zn2 plus concentration 1 molar, what should be the concentration of Cu2 plus? What should be the concentration of Cu2 plus so that the cell is at equilibrium at 298 Kelvin? Solve it. What can you understand by the word equilibrium? So the reaction is not neither in forward direction nor in backward direction. So in this Nernst equation, what do you understand by the word equilibrium? How would you solve it by this word? You get to know that E cell is 0. So if I say the word equilibrium, it means E cell is 0. Okay? Yes, sir. Now solve it. तो log Q की वैल्यू पूरी अननोन लेंगे. अननोन क्यों है? यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस तो आपको पता है ना 1 है. Yes, sir. तो कॉपर 2 प्लस की तो कंसंट्रेशन निकालनी है. तो फिर एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग ना सही, आप लॉग की वैल्यू निकाल दो.
So 2 by 2.141. It's 2.2 divided by 0.0591. 0.0591. 0 is equal to 1.1 minus 0.0591 divided by 2 log q. Yes, sir. So log q is equal to 2.2 divided by Yeah, 0. 0.0591. Yes, sir. So log q is equal to 37.2 Yes, sir. and log q is equal to log 1 by Cu2 plus. So so Cu2 plus is equal to 10 raised to power minus 37.2. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the answer turns out to be 10 raised to power minus 37.2. 37.2. Okay. Let's have another question. Give me the answer of this one. So दोनों साइड कॉपर है. हाँ, दोनों साइड कॉपर है. आंसर. So 0.621. 621? How did you get that? What is the E naught value? So 0.68. E naught is 0. So Q. Both the electrodes are copper. माइनस हो जाएगा, उसमें माइनस नहीं है.
0. You say 0.059. It's plus 0.0591. मतलब 1 round off लिखते हैं. Got it? Yes, sir. Now these kind of cells are called concentration cells. Okay. Could you write the definition of concentration cell? Just write it. The cells in which the cells in which the cathode and anode the cells in which the cathode and anode are made of same material. The cells in which the cathode and anode are made of same material so that the E0 cell is 0, so that the E0 cell is 0, but the cell works due to a difference in concentration or partial pressure due to a difference in concentration or partial pressure of reactant and product is known as a concentration cell. Is that clear? Yes, sir. So that's what the word is, concentration cell. Now, having talked about this concentration cell, now we can even talk about the E of half cells. Okay? This Nernst equation can be used to find the electrode potentials at different concentrations. Let us say we talk about the electrode potential of a hydrogen electrode. Hydrogen electrode can be written as H plus aqueous plus electron giving us half H2 gaseous, or it can be written as 2H plus aqueous plus 2 electron giving us H2 gaseous. Okay, we are gonna keep the temperature as 298 Kelvin. Clear? Now the Nernst equation for this particular electrode would turn out to be E of H plus H2 is equal to, one thing we need to understand, that we are talking about standard hydrogen electrode. We are talking about hydrogen electrode. So E naught is 0, whatever it might be. So I don't need to write E naught. I'll simply write it minus 0.0591. Now for this equation, N value is 1.
So it will turn out to be simply log of, this is the product, this is the reactant. Product is a gas. So we are going to talk about the partial pressure of hydrogen raised to power 1 by 2. That is the stoichiometric coefficient divided by the concentration of H plus. So this will be the Nernst equation for this equation. Clear? Specifically for hydrogen. Yeah, specifically for hydrogen. Here the E naught comes out to be 0. Clear? In this case, the Nernst equation would be E of H plus H2 is equal to minus 0.0591 by 2 log partial pressure of hydrogen divided by the concentration of H plus raised to power 2. Now remember one thing, these two equations are exactly the same. There is no difference between these two equations, they are same. Now what you need to understand is that if we talk about this equation, either use this one or this one completely. Many a time students, what they do is they take one part from one equation and other part from the other equation and they get the wrong answer. So you have to be careful that you use the equation completely, not half and half of it. Okay? Clear? Now let's have a question. Calculate the potential of a hydrogen electrode at 298 Kelvin under 1 bar hydrogen at 1 bar hydrogen. Now I am giving you different questions. Dipped in 0.001 molar 0.001 molar HCl. Second, dipped in a solution of pH 4. Ananya, is this visible? No, sir. Okay. So what part is it visible? Okay, I'll just write it here. The first one, in a solution of 0.01 molar HCl. Now is it visible? Yes, sir. Okay. Second, in a solution of pH 4. Third, pure water. Fourth, 0.1 molar NaOH. Give me the answers.
सर फॉर्मूला में P क्या रिप्रेजेंट करता है? Partial pressure. अच्छा। pH2 we are talking about, isn't it? सर सबके लिए डिफरेंट आंसर होगा। Obviously. सर बट फिर P हमें पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का डालना है इसमें। वो तो सब में सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन तो डिफरेंट है ना। सर कॉन्सेंट्रेशन। ऑफ H प्लस। सर पीएच से कॉन्सेंट्रेशन कैसे कर चलेंगे? तो pH होता क्या है? नेगेटिव एसिड लॉग का। ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और सर प्योर वाटर से कैसे पता चलेगी? तो प्योर वाटर का भी तो एक pH होता है ना, उसमें भी तो H प्लस कंसंट्रेशन होती है। सर फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट वाले का आंसर 0.1182। -0.1182। हाँ माइनस तो रहेगी। हम्म। सर सेकंड वाला कैसे करेंगे? सेकेंड वाले में बेटा बहुत सिंपल सी बात है, pH इक्वल टू 4, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ H प्लस का?
log 4. 10⁻⁴ हो गया ना. pH is a negative log. तो करना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को 10⁻⁴ डाल दो बस, बाकी सब कुछ ठीक है. सिर्फ फिर से वही आंसर है. नहीं, अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इंस्टेड ऑफ 2. तो बट डिवाइडेड बाय 2 भी तो था. बेटा आप फिर से गलती कर रहे हो ना, आपने एक इक्वेशन वहां से यूज कर ली, एक इक्वेशन वहां से यूज कर ली. अगर आप डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो देन इन दैट केस H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो रेज़ टू पावर 2 भी तो हो जाएगा. देन इन दैट केस इट वुड बी द 8. 8. माइनस 0.2364. हम्म. तो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? What is the pH of pure water? 4 7. That's it. So the concentration of H plus would be 10 raised by minus 7. perfect. So minus 0.4137. Okay. सर ये NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है हमें. हाँ जी. minus 2.955. -2.955.
How did you get Yes, that? sir. So concentration put कर दी नहीं minus 0.05191 yeah. Ananya, what we are dealing with? We are dealing with sodium hydroxide. Yes, sir. Sodium hydroxide is a base. If we talk about its concentration, it will be the concentration of OH minus, not अच्छा the H plus. So first you will have to find the concentration of H plus, then use it in the reaction. Do it. सर तो concentration of H plus निकालेंगे कैसे मतलब Concentration of H plus into concentration of OH minus is 10 raised to the power minus 14. So if the concentration of OH minus is 10 raised to the power minus 1, the concentration of H plus would be 10 raised to the power minus 13. so minus 0.7683 It's simply multiplied by 13. 0.0591 multiplied by 13. Is that clear? yes sir Okay. Are you getting the hang of the questions here? So let's yes have sir another question. What should be the partial pressure of hydrogen? What should be the partial pressure of hydrogen so that a hydrogen electrode so that the hydrogen electrode dipped in pure water so that a hydrogen electrode dipped in pure water has a potential of 0 volt at 298 Kelvin.
तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है फिर? पोटेंशियल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट। यहाँ पे ई सेल क्या है? पोटेंशियल ही तो है। अच्छा हाँ। सर 0.0591 is equals to log p into 10 raised to power 14. सॉल्व इट। सर log की वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? 10⁻⁴ का लॉग लेना है तो वो तो -14 आ जाएगा। सर वो पार्शियल प्रेशर तो निकालना है ना, p तो वहीं पर है। तो पहली बात तो 0.0591 तो कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज इक्वेटेड टू 0। यस सर। सर तो 10 raised to power -14 P is equal to 10⁻⁴। -14। Yeah, that's the answer. ठीक है सर, निकल गया। Okay. Uh, let's have a small question then. Okay. This question is just a theoretical question. Okay. We are talking about a hydrogen electrode. Hydrogen, not a hydrogen electrode, but a cell. We have here PT. Here we have H2 gaseous. Let's say it's 1 bar. Then we have CH3COOH aqueous. This is 0.1 molar. We have a salt bridge. Here we have HCl aqueous. Again 0.1 molar. Here we have H2 gaseous. 1 bar. PT solid. Temperature 298 Kelvin. A simple question. Very simple question. E cell is first option positive, second option negative, third option 0. सर 0। नहीं नहीं,
जीरो नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होता तो मैं क्वेश्चन ना देता। हाँ। सर नेगेटिव। थिंक अगेन। अच्छा, ओह, एक्सपेंड एसिटिक एसिड है वो HCl है। सर पॉजिटिव। हाउ डू यू से इट इज पॉजिटिव? सर क्योंकि सेम उस पे नहीं है ना, मतलब जीरो तो नहीं होगा, हम्म। और नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। नहीं सर, नहीं समझा। When we talk about here the concentration is not of the acid, it's the concentration of H plus. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, हम्म। तो इस वजह से एसिटिक एसिड में H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एसिटिक एसिड इज द प्रोडक्ट साइड एंड HCl इज द रिएक्टेंट साइड। यस। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो ई सेल पॉजिटिव। ई नॉट सेल से ज्यादा आ जाता है, यहाँ पे ई नॉट सेल जीरो है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। So we have done a few questions of Nernst equation here. Okay. ओके सर। Next class, I believe we should be able to finish off the Nernst equation. Fine. Okay then.